relentless efforts by our healthcare workers, relentless efforts by our frontline workers, efforts to undertake vaccination on a large scale in this country has really saved this country and saved so many precious lives. इसी के अंतर्गत हम आपसे हाईलाइट करना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेव में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, उसके लिए जैसे इस मंच पे कई बार पहले भी बताया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर विस्तृत चर्चा, विस्तृत गाइडलाइंस, विस्तृत गाइडेंस के रूप में हमने कार्य किया। माननीय हेल्थ मंत्री महोदय के लेवल पर 25 नवंबर ऑनवर्ड्स डेली रिव्यू करते हुए सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को जोड़कर ऑन ए डेली बेसिस आइडेंटिफाई किया गया कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं और हमें क्या कार्य करना है। एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच, एक्टिव स्क्रीनिंग एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और लैंड बॉर्डर्स, साथ ही स्टेट्स को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके, जीनोम सीक्वेंसिंग एयरपोर्ट्स पर सेंटिनल सर्विलेंस के द्वारा और क्लस्टर्स में ताकि हमें वेरिएंट का जो स्प्रेड है वो मॉनिटर कर सकें, ग्लोबल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए डेली एक फील्ड एक्शन, फील्ड में क्या कार्य करने की जरूरत है, हमारा कंट्रोल रूम एमर्जिंग चैलेंजेस को डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालाइज करना और उसके बेसिस पर स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ संपर्क बनाते हुए उनको कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड करना। जितने भी पॉलिसी डिसीजंस थे, जैसे आप सबको अवगत है, चाहे वे वैक्सीनेशन से संबंधित हों, चाहे कंटेनमेंट से संबंधित हों, चाहे होम आइसोलेशन से संबंधित हों, उनको जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने आती रही उसको समझते हुए उन पर कार्य किया गया। मल्टीपल गाइडलाइंस को इस समय में रिवाइज किया गया, चाहे वह क्लिनिकल गाइडलाइन हो मैनेजमेंट की, चाहे टेस्टिंग की हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल की हो। डिफरेंट प्रोजेक्शन टूल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोवाइड किए गए, जहां पर कि केस की ट्रेजेक्ट्री और पॉजिटिविटी के ट्रेंड के बेसिस पर क्या चैलेंज हमारे सामने आएगा और किस टाइप का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह स्टेट को गाइडेंस दी गई। और अक्रॉस होल ऑफ गवर्नमेंट यह इंश्योर किया गया कि नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे मंत्रालय, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के सहयोग से इस कार्य को किया जाए। और इस विषय में हमने कई बार कहा है, कोविड की लड़ाई में सबसे मुख्य योगदान हमारे देश के हर नागरिक का था। उनको इसी मंच से एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, स्टेट ने, डिस्ट्रिक्ट ने एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट, एनजीओ का सपोर्ट और कम्युनिटी एट लार्ज के सपोर्ट ने लगता है कि इस देश में हमें इस सर्च को मेंटेन करने में, मैनेज करने में बहुत जो सहयोग दिया, उसके सुफलिताल अब हम जो हैं, अब उसका आउटपुट हमारे लोगों के सामने है। इसी के साथ ही अगर हम ओवरऑल आज की सिचुएशन को एनालाइज करें तो पिछले एक हफ्ते की केस पॉजिटिविटी 0.99% है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घटते घटते अब केवल 77,152 केसेस ही रह गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि मात्र 6,561 केसेस ही देश में रिपोर्ट हुए हैं। और इससे लगता है कि ना एक स्थाई पर हमारे देश की पीक कम रही, दूसरा वह पीक भी एक स्टीप डिक्लाइन का रास्ता उसने अपनाया और हम केसेस को मैनेज करने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। अगर आप डेली केसेस की ट्रेजेक्ट्री को देखें तो जैसे 21 जनवरी को 3,47,000 केसेज आए थे, उसमें एक शार्प डिक्लाइन होते अब 6,561 केसेज ही रह गए हैं। और जहां 24 जनवरी को डेली एक्टिव केसेस की संख्या 22,49,000 थी, वह घटकर अब 77,152 केसेज ही रह चुकी है। इसके साथ ही अगर हम स्टेट लेवल पर एनालाइज करें तो अब केवल एक ही स्टेट है जहां पर 10,000 से अधिक एक्टिव केसेज हैं। 5,000 से 10,000 संख्या वाले एक्टिव केसेज की स्टेट की संख्या 2 है और बाकी सारी स्टेट में 5,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेज हैं अभी, जिसमें कि मुख्यतः अगर देखें कि केरला में भी एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई है। वह पिछले हफ्ते से अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 0.47 टाइम्स ही एक्टिव केसेस रह गए हैं। महाराष्ट्र में भी 0.62 टाइम्स एक्टिव केसेस रह गए हैं। मिजोरम में भी 0.69 टाइम्स ही एक्टिव केसेस रहे हैं। और यह तीनों स्टेट इफेक्टिवली अभी देश के 50% के करीब एक्टिव केसेस को अकाउंट फॉर करती हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें केस पॉजिटिविटी, यानी कि यह एक दूसरा मानक है जिससे पता लगता है कि इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा है, तो उसमें भी हमने कंटिन्यूअस डिक्रीज नोट किया है। 9 फरवरी वाले हफ्ते में जहां देश में 141 ऐसे जिले थे जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी थी, अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे एनालाइज करें तो देखें कि यह 141 जिलों की संख्या घटकर 67 डिस्ट्रिक्ट हुई। फिर अगले हफ्ते 56 डिस्ट्रिक्ट और अब मात्र 29 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इसी के साथ ही 5 से 10% केस पॉजिटिव जिलों की संख्या में भी कंटिन्यूड बेसिस पर हमने एक डिक्रीज नोट किया है। 161 जिले घटते घटते 72, फिर 44 जिले और अब 34 जिले मात्र रह गए हैं। और साथ ही वह जिले जहां पर कि 5% से कम पॉजिटिविटी है, उसकी संख्या में एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज नोट किया जा रहा है।
जहां 9 फरवरी वाले हफ्ते में 432 ऐसे जिले थे, वह संख्या बढ़ी 595 जिले, 634 जिले, और अब 671 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से भी कम है। हमने देश के कोविड के केसेस को एनालाइज किया और हमने देखा कि अगर हम इस केसेस को प्लॉट करें और ये देखें कि देश में जो पिछली सेकेंड सर्ज में पीक आई थी 4,14,000 केसेस की थी, जो कि 7 मई को नोट की गई थी, और उस पीक के 10%, यानी कि जब उससे 10% केसेस पहले थे या बाद में थे, उस पीरियड को अगर हम एनालाइज करें और माने कि यह एक रिप्रेजेंटेटिव एक हमारे सामने पीरियड दर्शाता है कि जिसमें केसेस में पीक आना और पीक का डिक्रीज होना नोट किया गया, तो जैसे 20 मार्च को देश में 40,953 केसेस उस दिन पर्टिकुलर दिन नोट किए गए, और इट टुक 49 डेज टू रीच टू द पीक ऑफ 4,14,000 केसेस। उसके बाद हमने देखा कि 14 जुलाई को देश में 40,255 केसेस नोट किए गए, अप्रॉक्सीमेटली 10% द पीक ऑन बोथ साइड्स, और उसमें 68 दिन लगे। उसके कंपैरिजन में अगर हम थर्ड सर्च को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 4 जनवरी को 37,000 केसेस, 37,369 केसेस देश में नोट किए गए, और इसको पीक की तरफ जाने में, जो कि 21 जनवरी को 3,47,254 केसेस थी, उसको 18 दिन लगे। उसके बाद वह पीक कम हुई, एक शार्प ट्रेजेक्ट्री उसमें डिक्रीज की नोट की गई, और 14 फरवरी को देश ने अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द पीक, यानी कि 34,113 केसेस को नोट किया, जो कि 24 दिन में हमने अचीव किया। तो अगर आप इस डेटा को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो सेकेंड सर्ज थी उसका ओवरऑल स्प्रेड अगर 117 दिन था, तो ये थर्ड सर्ज में इसका ओवरऑल स्प्रेड दैट इज 10% ऑफ द पीक ऑन बोथ साइड्स, वह मात्र 42 दिन रहा। इसी के साथ ही उस समय में कितने केसेस देश में रिपोर्ट हुए, तो उस समय जहां सेकेंड सर्ज में 1,94,31,743 केसेस नोट किए गए, वहीं इस पर्टिकुलर सर्ज में 77,42,652 केसेस नोट किए गए, और जो दुखद डेथ हमारे देश में उस समय में रिपोर्ट की गई वह 2,52,000 थी, और इस समय में वह डेथ रेटा अराउंड 27,118 केसेस का था। इसमें से अगर हम रिकनसाइल्ड डेथ हटा दें, इस पर्टिकुलर पीरियड में जो रिकनसाइल्ड डेथ जो स्टेट्स ने नोट की थी वह 16,570 थी। उसके बेसिस पर अगर हम केस फैटेलिटी रेट को एनालाइज करें कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने केसेस आए और कितनी डेथ रिपोर्ट की गई, तो हम देखते हैं कि जहां सेकेंड सर्ज में ओवरऑल केस फैटेलिटी 1.29% नोट किया गया, तो अगर हम रिकनसाइल्ड डेथ को भी माने तो हमारे देश में ओवरऑल केस फैटेलिटी रेट इस पर्टिकुलर सर्ज में 0.35% नोट किया गया, और अगर रिकनसाइल्ड डेथ को हटा दें तो देश में ओवरऑल केस फैटेलिटी रेट 0.02% नोट किया गया। यहां हम आप सबके सामने यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यही सबमिट करना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स फोकस इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, focus in terms of case management and efforts towards vaccination have really served this India, this particular country right now very well in terms of management of the third surge. इसी के कंटेक्स्ट में अगर इसी डेटा को आप फर्दर एनालाइज करें तो जहां ब्लू लाइन से हमने आपको दर्शाया है कि कैसे देश में वैक्सीनेशन का पेस बढ़ा, तो अगर हम देखें कि पार्शियली वैक्सीनेटेड पीपल, जो कि अगर आपको तीसरे कॉलम में दर्शाया है, पार्शियली वैक्सीनेटेड पीपल एट द स्टार्ट ऑफ द सर्ज इन सेकेंड वेव, तो अगर आप उसको देखेंगे तो जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी, यानी कि उस समय पर एलिजिबल पॉपुलेशन में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज एंड पीपल फ्रॉम 45 टू 59 ईयर्स ऑफ एज विद कोमॉर्बिडिटी, तो उस टाइम में देश की जो ओवरऑल कवरेज थी फर्स्ट डोज की वह 10.1% थी, और अब इस पर्टिकुलर पीरियड में देखें कि यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड सर्ज जो कि 4 जनवरी था तो वह 90.83% थी, और इसी के साथ ही सेकेंड सर्ज में अगर हम देखें तो फुली वैक्सीनेटेड पीपल ऑफ द एलिजिबल पीपल जो 2.1% थे वह बढ़कर 65.4% हुआ। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबको यही सबमिट करना चाहेंगे कि यह ग्राफ क्लियरली दर्शाता है कि एफर्ट्स टुवर्ड्स वैक्सीनेशन हैज यील्डेड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट टू द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द थर्ड सर्ज, और जरूरी है कि वैक्सीनेशन पर हमारे एफर्ट्स उसी तरीके से बने रहें ताकि हम लाइव्स को सेव करने में सफल हो सकें। अगर हम आज देश की परिस्थिति देखें तो 178.02 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं,
जिसमें 90.96 करोड़ डोजेस फर्स्ट डोज कवरेज के द्वारा 97% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड। सेकेंड डोज के द्वारा 76.66 करोड़ डोज देते हुए 82% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड। प्रिकॉशन डोज जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज विद कोमॉर्बिडिटी, उसके द्वारा 2.03 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और यंग एडोलसेंट के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसमें फर्स्ट डोज के द्वारा 5.5 करोड़ डोजेज देते हुए 74% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड एंड सेकेंड डोज के द्वारा 39% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। आज हमारे सामने की अगर हम सिचुएशन को देखें तो देश में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स in consultation with Ministry of Health and other department had been issuing guidelines from time to time whether related with lockdown to unlockdown and strategic opening of the economy also। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो लेटेस्ट गाइडलाइन इशू की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कहाँ एक तरह से कैसे ग्रेडेड रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया जाए, उन गाइडलाइंस के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की थी उसको उसमें रिट्रीट किया गया। हम आप सबके सामने वही सबमिट करना चाहते हैं, जिस गाइडलाइन के तहत स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि वह कंटेनमेंट मेजर्स हों या रेस्ट्रिक्शंस हो या रिलैक्सेशंस हो, उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को नोट किए रहे, जिसमें मुख्यतः उन प्रांतों में जहां पर की पॉजिटिविटी रेट पिछले एक हफ्ते में 10% से ज़्यादा हो या बेड ऑक्यूपेंसी चाहे वो आईसीयू बेड्स हों चाहे ऑक्सीजन बेड हो, अगर 40% से अधिक वह ऑक्यूपाइड हों तो जरूरत है कि उन पर्टिकुलर एरियाज में रेस्ट्रिक्शंस या कंटेनमेंट मेजर्स को सुदृढ़ किया जाए। और हमने स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट की है कि लोकल एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पर अभी भी एनालाइज करते रहने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्यतः कितने केसेस आ रहे हैं, कहाँ क्लस्टर्स बन रहे हैं, क्या केस पॉजिटिविटी है, जोग्राफिकल स्प्रेड केसेस का क्या है, या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उस पर्टिकुलर प्रांत में किस लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, उसके बेसिस पर रिलैक्सेशंस और रेस्ट्रिक्शंस को एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जाए। इसमें मुख्यतः गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि चाहे कोई सोशल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, एकेडमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, कोई गैदरिंग्स हो, कॉन्ग्रीगेशन हो, वह रिज्यूम की जा सकती हैं अगर इन ऊपर वाले गाइडिंग प्रिंसिपल्स को और एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंफर्टेबल पाया जाता है। इसी के साथ ही हमने स्टेट से यह भी कहा है जिसमें कि गाइडलाइंस के थ्रू कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा सकती हैं और साथ ही हाइब्रिड मॉडल जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैरिजेज और फ्यूनरल्स और लास्ट राइट्स अलाउ किए जाएं, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज हों, सिनेमा हॉल्स हो, रेस्टोरेंट हों, जिम्स हों, स्पाज हो, स्विमिंग पूल्स हों या रिलीजियस प्लेसेज हो, उनको भी ऑपरेट किया जा सकता है ऊपर वाले उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इंटर की गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए फील्ड लेवल पर रिक्वायर्ड डिसीजन लिया जाए ताकि ओवरऑल केस मैनेजमेंट के जो भी गेन्स देश ने, स्टेट ने या डिस्ट्रिक्ट ने अब तक ग्रहण किए हैं, पाए हैं, वह कंटिन्यूड बेसिस पर बने रहें। आज जरूरत है कि हम नए नॉर्मल के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते रखें, जिसमें कि हमने आज केसेस की संख्या में कमी है, लेकिन जरूरी है कि जैसे हमने दर्शाया है कि विश्व में अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां केसेस अधिक संख्या में आ रहे हैं, जहां केसेस की गति में अधिक संख्या एक दिखाई देती है, तो जरूरी है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार को हम अपनी लाइफ में अपनाते रहें, मास्क पहनकर ही आगे का कदम बढ़ाएं। कोविड से बचाव अभी भी जरूरी है और संपूर्ण टीकाकरण हमारा सुरक्षा कवच के रूप में हमारे सामने रहेगा, जिसको हमें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। Thank you so much. Now, friends, I will talk about the COVID vaccination and the scientific journey, how the vaccine development, how the vaccine deployment, and how the vaccine impact, which we have measured scientifically, will be documented before you. It is the credit to the scientists, it is the credit to the frontline workers, it is the credit to the lack of vaccine hesitancy in our population at large, the messages that you have disseminated to the society at large, that vaccination uptake has been so high and the country has been saved in this Omicron wave. And how that has happened, I will talk a little bit about each of the three factors: vaccine development,
and the science behind it, what has been published and scientifically documented in all peer-reviewed international journals across the world, showing India's scientific prowess, how vaccine has been deployed, and then now, once the vaccine has been deployed in such a large population, 96% and 82%, what has been, how we have measured the data, we will talk about that. So, vaccine development, there have been laboratory studies, there has been private-public partnership, we have leveraged international science, we have has the government commitment and critical support for the development of the vaccine. And as you can see, there were two approaches for vaccine development. One was leveraging India's scientific prowess. That was approach number one, wherein R&D, product development, large clinical trials, we were able to develop two indigenous vaccines. One is a whole virus vaccine and the second is a DNA vaccine, purely indigenous. The second approach was we leveraged international science, wherein there was data available, there was technology transfer, we did bridging studies, again scientifically published, and augmented the production, and the several vaccines were developed, which included 4 of them there, which are clearly mentioned. Right from the beginning, when the first case of COVID-19 landed in India and was diagnosed on the 30th of January 2020, we started the hunt for the virus, to culture the virus and then grow the virus in BSL-4 facilities, because we did not know how the virus is spread, how dangerous it is. And we isolated the virus on 5th of March, in March, and we were the 5th country in the world to isolate it. That is published. We isolated the alpha virus, the beta virus, the delta, the omicron, and all that data, including the electron microscopy of the virus, is all published in top international journals across, talking about India's scientific prowess. Now this is about Covaxin development, how we identified the vaccine candidate. Then the preclinical small animal studies were done. These were 2 studies which were published in one of the best journals in the world, iScience. Then we had preclinical studies in monkeys, which established the safety, immunity and dosage of this vaccine, and that was published in Nature. And then we had the phase 1, phase 2 and the phase 3 published in the Lancet. And then then we got WHO emergency use licensing, and US FDA approval is in process, and Canadian FDA is in process and should happen for this vaccine very soon. Other COVID vaccines, we did work on preclinical studies and large animal studies for these 3 vaccines, which was the world's first DNA vaccine, first indigenous thermostable mRNA vaccine that was studied by us. We did bridging studies for other 3 international vaccines which have been published, and the research publications are shown on the right. So this is all scientific data that has gradually matured and published, and that is why we thought we'll share with you. In terms of neutralization of vaccines, variants, we had the alpha, beta, delta, omicron. We found the 3 of them. Both the vaccines which are been used in India have worked very well. However, for the South African Omicron strain, they have not worked that well, and there's again all published in scientific literature from India in all the journals, and the references are clearly marked. Now, so it was a whole of government approach, where whether it was funding for the vaccine development, whether it was preclinical studies, whether it was laboratory studies, clinical studies, epidemiological studies, rolling regulatory review, which was done. We were innovative in the advance purchase orders by the government, at-risk manufacturing by these companies, raw material import, and how the Ministry of External Affairs facilitated the same for many raw materials, and then expedited batch testing and release of the vaccines from our outfit in Kasauli, and more outfits were created after that for testing each and every batch for the vaccine. And that is how it was critical and timely support for that magic shield that we were able to develop. That was the first part of the story, that we have developed the magic shield, and the amount of work, amount of science, amount of agencies involved, how it has worked. The second part is the vaccine deployment, and
Love has already talked about how the frontline workers, how the ASHA workers, how the ANMs, and how the programmatic preparedness, standard operating guidelines, agile vaccination strategy, and a whole of government approach really helped us in getting this huge vaccination for a 1.4 billion population. So these were the rollout plans for the Ministry of Health, the COVID-19 vaccination operation guidelines, and the communication strategy. And it was because of the communication strategy that we didn't see vaccine hesitancy in a major form in this country at all. And it was accepted very well by the people. We had a governance structure with the NEGVAC and the NTAGI, and at the state level, at the district level, at the block level, we had the state steering committee, we had the state task force, then the block task force, block control room, and how the entire machinery was involved in giving the vaccination to such a large population effectively. Now, we have developed the vaccine, all the science behind it, that is all published, all available in public literature. We have deployed the vaccine, large population, it is all available on the CoWIN, and we all know, we are all receiving messages on our mobile phone. Now, whether this vaccine has been effective or not, we have collected data on that, and how the vaccine impact has been measured by evidence-guided vaccination, database-derived monitoring, tracking vaccine effectiveness. Now, India is the second country which has a vaccine tracker for the last 6-7 months now, which is in public domain on the Ministry of Health website, National Vaccine Tracker, and that has been there. And high vaccination has caused reduced morbidity and mortality, and we have studies to show the same. So this is the national database, which has 3 databases. One is the CoWIN database, then is the ICMR testing database, and then the India portal, COVID India portal of the Ministry of Health. This has data of 94 crores 47 lakhs 9,598 individuals as we speak today. Partially vaccinated are around 15 crores, fully vaccinated are 73 crores, and unvaccinated are 5 crore still. So that is the data. Vaccine effectiveness in mortality prevention in person time years has been measured. First dose is responsible for 98.9% vaccine effectiveness, and if both doses are given, then it is 99.3% effectiveness. And here you can look at the vaccine tracker right from 18th of April right up to the 20th of February that we are showing you, how mortality has reduced and how we have had unvaccinated individuals. During 2022, unvaccinated individuals were 92% responsible for all the deaths. So the number of deaths that have been talked about by Love Agarwal, the 92% of those deaths have been because of unvaccinated individuals. And this is data from 3 databases with more than 94 crore population, one of the largest ever in the world. Now, if you look at the international comparison of cases, only cases, deaths I will come to next time, just the cases during the first wave, during the second wave, and during the third wave. If you look at the graph on the left, we can see several countries, whether it is Russia, whether it is United Kingdom, whether it is Brazil, USA, Canada, and India, and we have tried to put other countries in the background in the second graph and just show you what is India's number of cases, how the first wave was distributed. The second wave cases were there, yes, and the third wave cases were much, much smaller than anywhere. I mean, look at the peaks of different countries across the world, South Africa, USA, United Kingdom, and you can see this. This is data from the international database, world data, and you can access it anytime. It's in the public domain, and you can clearly see how the Indian graph is more or less very much lower than what you see in the other countries, and many of them being developed countries. This was the cases. Now we have a similar graph on deaths. If you look at deaths,
This is showing you the deaths during the Omicron upsurge. And if you can see different countries, same again, we find that Indian graph is on the right hand side. It is superimposed in the first ones, and you can look at all the developed countries, United States, Brazil, United Kingdom, Canada, and here we see India, and then there you can see the right extreme right hand, a little peak of that you are seeing the number of deaths in Omicron, and you can see the much larger peaks in the other countries, wherein we find much larger peaks in terms. Why has this happened? Why did we find much lesser number of deaths or cases in India during the Omicron surge? Because of vaccine development. We had our own vaccine. We had the excess production, extremely excessive production of these vaccines. We had a rapid deployment with our frontline healthcare workers, and I'll tell you the numbers in the next slide. We had tremendous amount of vaccine acceptance. Again, credit to all the media, credit to all the communication strategies, how vaccine acceptance was responsible for such a wide scale coverage of the vaccine, which ultimately protected India. We can see the high vaccine coverage, and that is because of a political commitment, because of a well-established universal immunization program for the last 6 decades, which has got, where we have 2.3 million ASHA workers, 3,48,000 and 28,000 private vaccination centers, 3,48,000 public and 28,000 private vaccination centers, which were responsible, and India emerging as a vaccine manufacturing superpower, and we already have been established as a vaccine deployment superpower in terms of the coverage that we have been providing for the last 6 decades in our universal immunization program. We have demonstrated to be an IT prowess with the CoWIN app, with a open source platform which has electronic appointments, electronic scheduling, electronic QR coded certificate for vaccination, and reminders. And then we have citizen participation with self-help group, local governments, which have really contributed tremendously in this excellent high vaccine coverage drive that India has emerged. And if you look at some of the hospitalization data for the third wave, I have presented it in the past, but I will talk about it again, comparing the fully vaccinated and the unvaccinated. The deaths was 10.2% in the hospitalized patients versus 21.8% in the unvaccinated or partially vaccinated, and 91% or 80 to 90% of these people had comorbidities. And this is a striking impact of vaccination, which is clearly documented, published, available in public literature. And this is a summary slide showing you how our vaccination drive, which is the orange line, the case fatality rate from April 2020 to January 2022, how the case fatality rate has been falling as the vaccination has been going up, mainly from July, August, that it really peaked up and it really fell last. These are the research publications, more than 250 research publications from several organizations in international literature, peer-reviewed journals, all published, all available and can be found, but these are all peer-reviewed, fully published, not preprints at all, and these are fully published papers, and recent Omicron papers are also mentioned, and the 5 issues of the Indian Journal of Medical Research also. We have also have this, I will leave you with this last slide, our beautiful country, Northeast, where we had the iDrone, drone response and outreach in the Northeast, in Manipur and Nagaland, how vaccines were delivered by the drones. So thank you so much for your attention. Thank you, Professor Bhargav. Thank you, Love. In this meeting today, we have brought forth to you the updated status of the pandemic in the country, important learnings as we move forward. You saw analyses of different surges, for example,
And then we brought to you through this comprehensive presentation by Professor Bhargav a composite story, a crystallized story on India's vaccine journey and its impact. Let me first address the second part of our discourse. It is evident that in protecting lives in the recent surge, vaccination and vaccination coverage of a very high order that this nation achieved played a very important role. This, of course, is compatible with the experience in other nations, with other vaccines as well. But the fact remains that in a vast nation with a huge population, to have achieved a vaccination coverage of adults to the tune of 97%, as you saw today, 83% second dose coverage, etc., is absolutely remarkable, and that credit, as Love stated, goes to the people of India. People of India, the government, the state government, union government, district teams, healthcare workers, social mobilizers, and so on and so forth. So vaccine has protected the nation in the surge that we just experienced this time. And it is a day on which we, through Sir's presentation, we would like you to join us in paying tribute to the science enterprise of this nation, the science corona warriors, people who worked in the labs, people who worked close to the live virus in zillions, billions and billions of live viruses on the petri dish in the labs. Following SOPs, they conducted what potentially is a very dangerous research work, but it has to be done. That is the karma and the dharma of the scientist. You may have seen a mention earlier also from Dr. Bhargav that virus challenge studies were conducted by the National Institute of Virology for more than one vaccine, in which the primate animals, I guess monkeys, are given live virus into their system. They're exposed to live virus in a controlled condition, then they're observed in a systematic way, and then studies are conducted. Now this is done by teams. Such difficult experiments had to be done in this journey to reach where we reach in terms of vaccine development. And this did not only happen for Covaxin, it was done also for other vaccines. Very correctly highlighted that we worked on two tracks, the original work for our own vaccines and also adapting technology very rapidly for scaling up the vaccine. So India is fortunate to have a plethora, a bouquet of platforms of different kinds, which augurs well as we move into future. For the emerging needs for vaccine, as we move into this phase and beyond, globally and in India, and also for using these platforms for other vaccines and even other diseases. mRNA technology may come handy for finding a cure for cancer, finding a cure for some of very difficult to treat diseases such as autoimmune diseases. So the science will have, science investment and science effort of these 2 years and beyond will have dividends in times to come. So we salute the science enterprise, the scientists, the technicians, the leadership of science research in biomedical sciences of our nation, coupled with the industry, because they take it to scale.